हाय गाइस, वेलकम टू ओएस हब। केमती अछंती आपण माने? आवाज सुबुची क्लियरली? हाय गाइस, केमती अछंती आपण माने? तो आज हमर यूनिट 2 सोशियोलॉजी ऑप्शनल लो यूनिट 2 रो सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन सेंस केमिति सॉल्व करिवा एंड किछि प्रैक्टिस क्वेश्चन मु देबी। और वैल्यू एडिशन क्लासेस करूचंती या मेंटरशिप क्लासेस जो माने करू आपण यार रिजल्ट बहुत भल देखिए आग को डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। तो सेइथि पई आपण क्लासेस गुड़ा रेगुलरली फॉलो करंतु जहाँ भी मो वीडियोस पकाउची यू डू फॉलो रेगुलरली एंड यू विल गेट ए वेरी गुड आइडिया जो ऑप्शनल हेल्प करिवा एवं सोशियोलॉजी ऑप्शनल थ्रो रे आमे केमिति बेसिकली बहुत पिला अछंती। सो ये मेंटरशिप प्रोग्राम मो जोने स्टार्ट करिची तुमरो नेक्स्ट संडे संडे आपनकर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होची संडे टू जल्दी जल्दी जॉइन करंतु संडे रु जो टेस्ट सीरीज होची सेटा आपण पूरा डिटेल्स रे पाइबे तार एनालिसिस वगैरह सेटा भी मध्य आपण माने मु खाली देखि दिए को माने देखुचंती। तो टेस्ट सीरीज सहित अलाइंड हेगी टेस्ट सीरीज सहित अलाइंड हेगी ये आपण पाई परिबे। माने आपण टेस्ट सीरीज सहित क्लासेस रो पूरा अलाइनमेंट हेगी आपण पाई। ओके, so let's start। तो आज यूनिट 2 देखिबा वी हैव आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन। तो सोशियोलॉजी रो जो माने भी आगो को मेंस दबा को जाउछंती तो जरूर आसंतु टेस्ट सीरीज पर्सनली चेक करी आपनकर आंसर एंड एज वेल एज मु बसी रही जो दिन टेस्ट हबो मु बसी रही एवं आपनकर जहा डाउट थिबो आपन आसी पछ आपण जा इश्यूज थिबो विल डिस्कस। एग्जाम आपन दियंतु एवं एग्जाम रेगुलरली दियंतु 12टा टेस्ट 14टा टेस्ट आपनकर एवं सेइते आगे फर्स्ट 3टा यूनिट रहिबो एवं थिंकर्स पार्ट गुटिए टेस्ट काई केना में ता सहित अलाइंड हे ताको हमें ये अनुसार जो मैंने एथर दउचंती एग्जाम खास करके तो हे जाई मानकर सिलेक्शन हे नहीं तांको पई भी कहबी छाड़ंतुनी एबेटू से प्रिपरेशन रो जो एवं यू प्रिपेयर नॉट फॉर प्रीलिम्स नाउ डोंट थिंक द प्रीलिम्स हेनी केवल प्रीलिम्स पई एबेटू पड़िबा एटा बुकामी रहिबो प्रिपरेशन शुड बी फॉर मेंस। ओके, तो से अनुसार आपण प्रिपेयर करंतु। तो यूनिट 2 आज आम देखा यूनिट 2 रो जदि टॉपिक सिलेबस देखिए सब आप माइंड रो सिलेबसटा जमती घुसा होगी थी सिलेबसटा सब आप माइंड रो प्रिंट होगी थी। तो आप यूनिट 2 साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना से प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी ये आप देखिपारे प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी issues of measurement in social science element of scientific method
एंड थियोरी एंड फैक्ट्स हाइपोथेसिस कौन रिसर्च डिजाइनिंग से रिसर्च डिजाइन एक्सप्लेन कंटेंट एनालिसिस then important point is यहाँ पर क्वेश्चन क्या से problems of objectivity and value neutrality. What is objectivity, what is value neutrality, and what are the problems associated with it. तो ये क्वेश्चन से सोशल साइंस ऊपर आम स्टडी करिया मेजर करिवे से तार रिलेटेड कौन कौन इश्यूज आसे से भी मध्ये आमे देखियो. ओके तो ये आमे तो देखिवा क्वेश्चंस जो देखिवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी डिस्कस विथ रेफरेंस टू वेबर व्यू ऑन दिस मेथड. तो आपन को कथा लाकी सिलेबस आपन को ठीक लागिवो कि बहुत लिमिटेड सिलेबस बट गोटे जिनस जोटा कि बहुत पिला ताको लिंक करि पारंतनी आमे लिंकिंग करि पारुनी कि वेबर व्यू ऊपर केमिति कोन आंसर आसीबे जेमति ए क्वेश्चन के वेबर्स व्यू ऊपर क्वेश्चंस पचार दी तो आपण कोन कोन करिवे कोन माने बेसिकली केमिति अटेम्प्ट करिवे. तो या पूर्व आमे इंट्रोडक्शन दबा कि ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी कोन. ओके तो कहीं कहुई ना सोशियोलॉजी जो स्टडी करवा सोशियोलॉजी जे साइंस आम जो कनसीडर कले सोशियोलॉजी जे सोशल साइंस जो कनसीडर कले स्टडी कले तो से स्टडी क्या करुचे सोसाइटी केमी करुचे साइंटिफिक वे स्टडी कर. तो से ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी रो इम्पोर्टेंस बहुत. ओके तो सही पॉइंट ऑफ व्यू रे तुम इंट्रोडक्शन टा हवा दरकार कि दीटा जाक लिंकिंग करके हवा दरकार. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲୁ କ'ଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ସେଇଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଦ ଟୁ କୋର୍ ମେଥଡୋଲୋଜିକାଲ ଆଇଡିଆଲ୍ସ. ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗର ଆଉ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ଏନସ୍ୟୋର କରିବେ. ଦି ଜଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ହଉ ୟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଏନସ୍ୟୋର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗର ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲିଟି ଭାବି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ୱେରେ ହେବା ଦରକାର. କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମେ सोसाइटी स्टडी करूँ तो आम पार्ट ऑफ द सोसाइटी ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग इज रिसर्चर को माने आमे आमे ही द पीपुल जते रिसर्च करे से डेफिनेटली तुमरा फरक पड़े. So objective refer to the absence of personal bias, whereas neutrality emphasizes that researchers should not allow their personal or social. ସେଇଟା କଥା କହିଲି कि absence of personal bias. Objectivity कौन ना absence of personal bias. Neutrality कौन ना जोटा कि facts. Whereas new value neutrality influence the interpretation of the facts. Facts interpretation समय तुम्हें मोर न्यूट्रालिटी वर्क. तो मैक्स वेबर जेहेतु विथ रेफरेंस टू मैक्स वेबर कहि देखो इंट्रोडक्शन रे वैल्यू न्यूट्रालिटी अछि objectivity अछि and as well as Max Weber views. So Max Weber provided the nuances of understanding this concept in his methodological writing, especially objectivity in social science and social policy. So देखो केमिति गोटे इंट्रोडक्शन रे मोर व्यू पॉइंट मु रखी देली. इंट्रोडक्शन रे यू हैव केप्ट योर व्यू पॉइंट इंटैक्ट कि आमे पूरा सिस्टमैटिक वे रे रखिले कि मैक्स वेबर व्यू कौन थे या जोटा कि जरूरी कहीं आम ता आग को डिस्कस एंड आम सम पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन करदे कि यार इंपोर्टेंस ऑफ द वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिव एंड तार डेफिनेशन भी आम लिखिदे कि ऑब्जेक्टिविटी कौन वैल्यू न्यूट्रल राइट. बुझीगला समस्ते बुझीपार. तो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स maintaining impartiality and empirical accuracy in objectivity means maintaining impartiality and empirical accuracy in research. For Weber complete detachment partiality as well as empirical accuracy objectivity एंड वेबर कहले कौन ना कंप्लीट डिटाचमेंट ये गोटे प्रैक्टिकल अप्रोच देले. देखो एथर वेबर भी कहते
या उपरे कार्ल मार्क्स भी कहते या उपरे डरखाइम भी कहते ओके बट कथा कि यांकर जो आइडिया थिला मोर बैलेंस्ड वे कौन सी कहले कि कंप्लीट डिटाचमेंट इज डिफिकल्ट बिकॉज सोशल रियलिटी इज वैल्यू laden वेबर कहले कंप्लीट डिटाचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट because social reality is value laden but objectivity can be achieved through methodological discipline objectivity can be achieved through methodology ये कहले कौन कि कंप्लीट जो आमे कहूचे कि पूरा आमर माइंड ऑफ कर दवा स्विच ऑफ कर दवा जते आमे रिसर्च करछे सेटा वेरी डिफिकल्ट एंड रियलिटी से आमे एज ए ह्यूमन बीइंग आमर इमोशंस अछि एज ए ह्यूमन बीइंग आमर किछि वैल्यू अछि तो जेते जो कोनोसी रिसर्च करूचे आमर सम पॉइंट ऑफ आमर वैल्यू सिस्टम अटैच हो जाउ है ना नहीं मानि तुम हिंदू अच्छो मुस्लिम स्टडी कर तुम तुम हिंदू वैल्यू सिस्टम किसी ना किसी इंपैक्ट कर जो इस्लाम उपर स्टडी कर राइट तांकर सोसाइटी उपर स्टडी कर इट इज वेरी डिफिकल्ट से एंड बिकॉज सोशल रियलिटी इज वैल्यू लादे कि सोशल रियलिटी है वैल्यू सिस्टम आम से वैल्यू सिस्टम बेस्ड आम जहाँ कर बट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू मेथोडोलॉजिकल डिसिप्लिन कौन ना यूजिंग क्लियर कॉन्सेप्ट वेरीफाइबल डाटा ये तीन टा जिनस आम करवा मेथोडोलॉजिकल डिसिप्लिन करवा क्लियर कॉन्सेप्ट वेरीफाइबल डाटा लॉजिकल रीजनिंग इट require intersubjective verifiability intersubjective verifiability that is findings should be valid regardless of how conduct the research এটা very important काहे मु कहूछु भल सुनो मानि नियो या कथा माने कोन ना वेरीफाइबिलिटी तुमे रिसर्च करिया गलो तुमे जो रिजल्ट पाइबो आउ जने रिसर्च करिया माने सी भी से रिजल्ट पाइबो आउ जने थर्ड पर्सन रिजल्ट माने रिजल्ट वैलिड रहिबो फाइंडिंग शुड बी वैलिड रिगार्डलेस ऑफ हाउ कंडक्ट द रिसर्च सेटा नेक्स्ट वेबर वैल्यू न्यूट्रलिटी जोटा कि वर्स्टेड कहा जाउतला एज पर द वेबर मींस दैट sociologist personal political or ethical value must not influence the analysis data value neutrality कोन वेबर कहले sociologist personal political हो पर्सनल रो पॉलिटिकल हो एथिकल वैल्यू इन्फ्लुएंस जेमती करू नथिबो जते एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जते करूथबे सेटा very minimum करूथबो however Weber accepted that to value guide the choice of the research topic ता माने कोन तुमे जने रिसर्च तुमे तुमरो वैल्यू कहबो खाइ एई टॉपिक रे मु भलो रिसर्च करि परबी आ तुमे क्लियरली कहबो भाई मोर आइडियोलॉजी हला एहा मु एई अनुसार रिसर्च what a research finding important to study but once research is begin value must be set aside तो start कर देवा research आउ सेही value को आउ consider करिवा नहीं during the data collection and it's very important data collection जतले करिवा interpretation जतले करिवा तेबळे सेटा को बाहर रखिबा हमर value system को अलगा करि रखिबा he distinguish between value relevance that is topic selection and value neutral analysis याकू अलग अलग तो ये बेसिकली कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू वेबर दिस अप्रोच इन्वॉल्व की एलिमेंट कोन गोटेला वैल्यू फ्रीडम गोटेला मेथोडोलॉजिकल रिगॉर्ड गोटेला वर्स्टेन कोनटा की वर्स्टेन मॉडल से तो देखियो वैल्यू फ्रीडम माने जोंटा की आमे ऑलरेडी डिस्कस कर सनी से कहले जे साइंटिस्ट अछन सोशल साइंटिस्ट ये भी सब बेले तांकर वैल्यू रु अलगा रखियो वैल्यू को फ्रीडम रखि माने पर्सनल वैल्यू और बिलीफ तांकर रिसर्च रे किछि जोंटा कि मु तुमको कहली तुमे जने रेडिकल हिंदू अछ तुमे गोटे क्रिश्चियन सोसाइटी को स्टडी करे जाउछो तुमर जते स्टडी करिया जाउछो तांकर सोसाइटी को सेते तुमर जो हिंदू वैल्यू तुमर जो आइडियोलॉजी सेटा इन्फ्लुएंस जेमति न करथो तो रिसर्च रे ओके ता माने तुमे न्यूट्रली एंड तुमर टारगेट हला कि भाई डाटा को केमति इंटरप्रेट करिवा एनालिसिस करिवा सेही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन शुड बी न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव कोन तुमे पर्टिकुलर स्टडी रे कोन एम कोंठी पहुंचिया चाहो न्यूट्रल कोन ना तुमरो जेमिति वैल्यू फ्रीडम हेतबा दरकार दैट इज तुमरो वैल्यू सिस्टम सेइथरे इन्फ्लुएंस सिमिलरली मेथोडोलॉजिकल रिगर ता माने मेथोडोलॉजी रे किछि चेंजेस करिवो रिसर्च करूचंती ओके रिसर्चर शुड यूज सिस्टमैटिक मेथड
जो सिस्टमेटिक समस्त एप्लीकेबल रिसर्च शुड यूज सिस्टमेटिक rigorous method of data collection and analysis to ensure that their findings are accurate नहीं माने कौन बारंबार रिलायबल माने कौन ये जो डाटा पाइले फाइंडिंग्स करिकी आउ जने रिसर्च कले भी सेम डाटा पाइबो आउ जने रिसर्च सेम ये पाइबो माने डाटा कलेक्शन वगैरह सब होउथबो जो मेथड अछि जो कलेक्शन डाटा कलेक्शन हो या एनालिसिस सेटा सबु बळे सिस्टमैटिक वे रे हबो वेल स्ट्रक्चर मेथड रे हबा जरूरी देन लास्ट ला वर्स्टेन वेबर सबले एम्फासिस कोन वर्स्टेन माने कोन अंडरस्टैंडिंग सोशल फेनोमेना को जो अंडरस्टैंडिंग करवा पीपुल पर्सपेक्टिव रे जोंटा कि इंटरप्रिटेटिव कहा जाए कि पीपुल के एक्सपीरियंस करिसंती सेही फील्ड रे माने तुमे स्टडी करिया जाउछ गोटे सोसाइटी रे सेही लोक मानक भीतर इंटरप्रिट ओके तो चाहे आमे एते स्टडी करूछु पीपुल जे कि जार स्टडी करछन सोशल साइंटिस्ट हो कैन गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड एंड अवॉइड imposing their own biases or assumption on माने कोन ए पीपुल रो इंटरप्रिटेशन करो कहार कोन माइंडसेट अछि सेही अनुसार तुम रिसर्च करि परिबा तुम बायसेस इथे जदी इन्फ्लुएंस न ये ता मेथड कहले जोटा की एलिमेंट तो फाइनली जे देखिबा वेबर व्यूज थिला ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस रिसर्च रे बहुत इन्फ्लुएंस थिला आ ये गोटे वेल बैलेंस वे पर थिले एवं सम क्रिटिसिज्म आल्सो जो अछि से कहले कि किछ कहले कि भाई ट्रू ऑब्जेक्टिविटी impossible that is 100% correct whoever somehow agree with it but all research definitely influence with their own backgrounds the research about our experience in how kichi argue kale kono na objectivity can actually lead to exclusion of diverse perspective खाली गोटी आमे डायरेक्शन जीवा अदर पर्सपेक्टिव को आमे इग्नोर करिवा है ना so then nevertheless whoever's idea of objective is an important part of the debate about and method while objectivity refers to freedom from bias in method and observation value neutrality refer to freedom from morals and ideological judgment the okay tomorrow Weber's balanced approach recognizes that although sociology cannot be entirely free from values, scientific integrity was that value be consciously controlled, ensuring sociology is both meaningful, credible. Okay, next, देखिए content analysis bridges the gap between qualitative interpretation and quantitative measurement. Okay, so qualitative interpretation and so content analysis main को and content analysis very important topic, very important content analysis. तो ये कहीं एनालिसिस करा जाए कंटेंट को जब एनालिसिस करिवो तळे आमे सिस्टमैटिक अप्रोच ऑब्जेक्टिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन एंड कम ओके दिस काउंट ही यूज करा जाए ना स्टडी मीडिया हो लिटरेचर हो लिटरेचर जने मीडिया तार कंटेंट एनालिसिस लिटरेचर हो स्पीचेस हो सोशल मीडिया हो अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ये जो मेथड अच्छे एनालिसिस करवा कंटेंट को बेसिकली कंटेंट माने धर गोटे न्यूज पेपर लिखाई न्यूज पेपर आर्टिकल बाहरी स्पीचेस मोदी जी गोटे स्पीच से स्पीच रु किछि आमे एनालिसिस करिया कि कौन से कौ एरिया को कौ डायरेक्शन को जाउछि तुमे मीडिया वाला जो समाव तुमे देखिदिबो एनालिसिस करंती आबरे दिस मेथड प्ले a unique role bridging the qualitative and quantitative divide offering both interpretative depth and statistical interpretative depth and statistical the qualitative nature of content social communication टेक्स्ट हला इमेज हला फिल्म हला एडवर्टाइजमेंट हला और न्यूज रिपोर्ट्स हला
से बहुत सारा सिंबॉलिक मीनिंग थाए, आइडियोलॉजीज थाए, कल्चरल वैल्यूज थाए, ये ताको एनालिसिस कर क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच हेबो आमे से अंडरस्टैंडिंग करिया कोन ना तार मीनिंग कोन कोन कॉन्टेक्स्ट कहिया चाहूची एंड पैटर्न्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कोन पैटर्न र रिप्रेजेंटेशन करिया को देला क्वालिटेटिव नेचर एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन क्वालिटेटिव और वाला क्वांटिटेटिव कोन केते नंबर्स क्वांटिटी माने नंबर्स तो ये क्वालिटेटिव जो एलिमेंट अच्छी जेतु क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कोन कि भाई मीनिंग हला कॉन्टेक्स्ट हला पैटर्न्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हला जोंडे कि आमे नॉर्मली आइडियोलॉजी कोन कल्चरल आइडेंटिटी कोन कल्चरल कोन मीनिंग कोन यार नंबर ऑफ यूज केमिति हेजी क्वालिटेटिव रु कंटेंट क्वांटिटेटिव करिवा ओके तारे क्वांटिफाइबल डाटा बाय कोडिंग करिवा काउंटिंग करिवा केते थर यूज होची फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक देमसेल्फ और वर्ड्स और सिंबल जेमति मानिने मोदी जी गोटे स्पीच देले बारंबार से स्पीच रो देखाला नंबर ऑफ टाइम से यूज करचंदी रिगार्डिंग इंडियन आर्मी तामने हमें जानिले कि तांकर फोकस गोटे एरिया पर थिला कोंटी जा सी यूज करचंती सी एग्रीकल्चर पई हमें जानिले कि भाई ताले सी एग्रीकल्चर ऊपर तांकर मेन फोकस थिला देखियो कि जेते एनालिसिस करे गोटे गोटे प्राइम मिनिस्टर बड़ बड़ लोकंकर स्पीच रो हो या गोटे गोटे फिल्म्स रो हो गोटे मीडिया डिबेट रो हो से गोटे गोटे जानि जिवो कि नंबर ऑफ टाइम्स कोनटा केमती यूज कराउची इंटेंसिटी को इंटेंसिटी यूज कराउची हमें जानिबा कि डायरेक्शन कोन डायरेक्शन से पर्टिकुलर डिबेट टा जाउची फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ टाइम्स द न्यूज़पेपर मेंशन क्राइम और डेवलपमेंट कैन बी स्टैटिस्टिकल एनालाइज टू इन्फर सोशल प्रायोरिटी और बायसेस माने कोन हमें बहुत थरे यूज करू क्राइम 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 ई प्रकार ही पारे लेट से यही सरकार प्रेजेंट सरकार ओडिशा रे जे अछि ता अगेंस्ट रो गोटे न्यूज पेपर आर्टिकल बाहरची एंड ओवर द टाइम देखा गला भाई गोटे मासर केवल क्राइम खराब जिनस गुड़ा नेगेटिव जिनस गुड़ा जो जते थर यूज होइची से आमे देखिदेले कि केवल एमाने सरकार नेगेटिविटी प्रमोट करिया चाहू आउ किछि अछंती मीडिया हाउसेस देखिले कि से केवल सरकार पॉजिटिव देखुछन नेगेटिव देखुना तो सेटू आमे जानि जिवा कि प्रायोरिटी कोन ओके क्वांटिफाइबल कंटेंट एनालिसिस येला क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव रो कोन बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स आमे देखिबानी केते थर यूज बेसिकली इंपोर्टेंस कोंटी दिया है को आइडियोलॉजी बेस्ड अछि को कल्चरल वैल्यू बेस्ड अछि देन क्वांटिटेटिव एंड ताको ब्रिज द गैप क्या थिला एटा गैप थिला ब्रिज द गैप बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव by quantifying qualitative data content analysis provide a scientific systematic scientific and replicable framework for interpreting cultural and social phenomena. It allows researchers to test hypotheses, compare pattern over the time or across the media, while still remaining sensitive the context. Thus, it merges interpretive understanding that is Verstehen model जोड़े with empirical verification. Empirical माने data oriented verification. Interpretive माने qualitative. Interpret कल केमिति तार टेक्स्ट को interpret कल qualitatively and empirical माने data or number of times it is used. Integrating the strength of both methodological tradition. Very important. तो आगुरु कोन गुटे क्वालिटेटिव गुटे क्वांटिटेटिव अलगा कंटेंट एनालिसिस जतरे करबा हमें क्वालिटेटिव रु क्वांटिटेटिव को कन्वर्ट कलो सो दैट गुटे integrative manner रे करि पारिलु. So in the essence content analysis serves as a methodological bridge between qualitative interpretation combining the depth of meaning of with the rigor of science. By doing so it helps sociology maintain sensitivity and empirical precision study social sorry in study social communication and culture. Okay, तो ये है थ्योरी. ये क्वेश्चंस हमें देखिले क्वेश्चंस हमें दीटा देखिले क्वेश्चन बुझी पारिबो नाही जो माने बिल्कुल पढ़ी नथि बट मु जेमिति बुझेली समहाउ तुमे किछि मात्रा रे बुझी पारथिबो. सॉरी गाइस. ओके देन ये ला प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी.
या ऊपर डिटेल्स अछि कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कि सबले एम करे प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव बट से भाया अचीव करवा वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्ट अचीव करवा मेथड बहुत बड़ा चैलेंज मेजर मेथड रिसर्चर इज आल्सो मेंबर ऑफ द सोसाइटी बीइंग कि जोटा कहली आम जी रिसर्च करे जाऊे मानिनियो तुम्हें रिसर्च करे जाऊे या मु रिसर्च करे जाऊे वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी तो मेंबर ऑफ द सोसाइटी मेंबर ऑफ द सोसाइटी आम है आम केमी बायसलेस हो पार डिफिकल्ट इमोशंस अच्छी सो सोशल फेनोमेना वैल्यू लादेन सोशल फेनोमेना सब किसी ना किसी वैल्यू सिस्टम आम किसी ना किसी आइडियोलॉजी ता भीतर कास्ट सिस्टम हो जाओ रिलीजन हो जाओ कल्चर हो जाओ फूडिंग सिस्टम हो जाओ एवरीथिंग वे ऑफ लाइफ हो जाओ तुम रिचुअल्स हो सैक्रिफाइसेस हो एवरीथिंग वी हैव अटैच्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड and we are part of the society so value लादे नहीं थी वो context dependent है and ये सारे interpretation ऊपर depend करे objective definition objective means freedom from personal biases emotions prejudice in collection and interpretation data this is very important ये statement गुड़ा मन रखिबो statement गुड़ा सबुठु मन रखिबो दरखाम कहले ऑब्जेक्टिविटी केमती ना सोशल फैक्ट्स भले स्टडी करो एज ए थिंग्स रिसर्च शुड ऑब्जर्व क्लासिफाई एंड एनालाइज डाटा विदाउट मोरल जजमेंट तुमर किसी जजमेंट आशा आण डाटा कलेक्शन करो भाई 100 जन लोक या कहले 10 जन लोक या कहले 15 जन लोक या कहले डाटा कलेक्शन करो ताकू काटी कुटाकी एनालाइज कर मेजॉरिटी लोक भाई 50% लोक ए सपोर्टर 50% या सपोर्टर दैट्स डन अंडरस्टैंड राइट तो ये कहले कौन ना ऑब्जेक्टिविटी है से दरखाम कहले तो वैल्यू न्यूट्रलिटी बेसिकली मैक्स वेबर डेफिनेशन मेनली लिया जाए वर्स्टेन मेथड वैल्यू न्यूट्रलिटी मींस दैट रिसर्चर शुड नॉट लेट पर्सनल वैल्यूज इन्फ्लुएंस साइंटिफिक बट ओवर कहिथिले वैल्यू डिटरमाइन व्हाट वी स्टडी व्हाट वी शुड नॉट इन्फ्लुएंस एंड हाउ वी स्टडी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट ओवर कहिथिले कि इम्पॉसिबल वैल्यू एंटायरली न्यूट्रल हवा इज वेरी possible and that is true also as they guide topic selection however once research begin research start habo kaina value neutrality hi pariyuni keni tumar value अनुसार तुमे गोटे research topic choose एटा तुमर prerogative तुमर rights अछि but once you decided research start हे जिवो सेतेबे आउ सब value किछि छाडी रही आउ तुमर किछि value नै जेमिति तुमे गोटे जज अछ सुप्रीम कोर्ट जज जिते बस वन्स यू आर इन द जज मूड तुम्हें सोसाइटी अच्छे ठीक अच्छे तुम अलग वैल्यू अच्छे अलग रायता फेल जहाँ वन्स यू आर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से समय तुम्हें ना हिंदू ना मुसलमान ना तुम कौ कास्ट आस ना कौ किछ यू आर एज ए जज एंड हैविंग स्विच ऑफ ऑल योर पर्सनल वैल्यूज एंड बायसेस ओके मस्ट सस्पेंड ऑल वैल्यू जजमेंट इंटरप्रेट फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली देख लो जज जज हिसाब से तुम्हें ये जिनस या सपोर्टर अच्छी ये फैक्ट्स अच्छी राइट यार थिंकर्स व्यू ऑन ऑब्जेक्टिविटी अगस्ट कॉम्टे हो दरखाम हो मैक्स वेबर हो देख मु खाली वेबर पढ़ी बट ये जिनस भी मुझे देखे दूची कार्ल मार्क्स हो फेडरल हो एंड ये सब तुम देखो प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च बायस रेस्पोंडेंट बायस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एथिकल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लुएंस तो यार जार दरकार से जो फ्री सेशन मु नौचे बाकी ऑलरेडी मेंटरशिप रे जो माने एनरोल करछन तांको तो एप्लीकेशन मिल जिवो जो माने मेंटरशिप रे एनरोल करना ये माने वैल्यू एडिशन आपनकर ऑफिस नंबर रे कांटेक्ट करिवे तो ये सेमती क्रिटिक्स के थिले पॉजिटिविस्ट क्रिटिविस्ट एंड क्रिटिकल स्कूल सब थिले ऊपर देख इश्यूज ऑफ मेजरमेंट इन सोशल साइंस कौन कौन इश्यूज अच्छी डिफिकल्टी इन मेजरमेंट गोटेला इंटेलिजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स हैप्पीनेस ट्रस्ट कल्चरल वेरिएशन इन मीनिंग सब्जेक्टिविटी इन परसेप्शन अनस्टेबल रेस्पॉन्स जोटा कि सॉल्यूशन कौन यूज स्टैंडर्ड स्केल लिकार्ट स्केल थर्स्टन बोगार्डस एम्प्लॉय ट्रायंगुलेशन यूजिंग मल्टीपल मेथड टू क्रॉस वेरीफाई ऑपरेशनलाइजेशन डेफिनेशन डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट इन टर्म्स एगुड़ा तुम बुझिया डिफिकल्ट हम मु जीरो रु बुझे पारिबी नहीं दिस इज द मेंटरशिप प्रोग्राम व्हिच इज समवन वी न्यू अबाउट दिस थिंग्स तो मु जानि छी जे एबे नुआ देखु तो ताको बुझिया डिफिकल्ट हम तो फॉर दैट यू नीड टू जॉइन द फाउंडेशन कोर्स फाउंडेशन रे
पूरा डिटेल्स रे आपण गोटे गोटे टॉपिक मु गोटे गोटे क्लासेस ने 1.5 घंटा 2 घंटा तो सेही अनुसार आपण जॉइन करंतु एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स so scientific method refers to the systematic logical and empirical process systematic logical and empirical process of collecting and analyzing data discover and verify social knowledge. It provides objectivity reliability and validity in inquiry. Thinkers like August Comte, Durkheim and Weber laid the foundation for the applying scientific. So elements of scientific method तार ये क्वेश्चंस भी आसे ये तीन जन कर बेसिकली मेन साइंस सोशियोलॉजी जे साइंस ए मान बहुत बड़ रोल अच्छी कॉम्ट एंड डरखाइम खास करके देन वेबर कैन नॉट फॉरगेट या उपरे साइंटिफिक मेथड कौन कौन ना लॉजिकल स्टेप्स कौन नवा डरखाइम कौन कहते मस्ट फॉलो इन ए साइंटिफिक मेथड टू एस्टाब्लिश इटसेल्फ एज ए डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन जोटा कि यांकर से सक्सेसफुल फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाए व्यवहार करे साइंटिफिक इंक्वायरी इन कंबाइंड कंबाइंस ऑब्जेक्टिव मेथड विथ सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दीटा कथा कहले ये बैलेंस ये मोर रेडिकल ये केवल कहले ऑब्जेक्टिव स्टडी ओनली ऑब्जेक्टिव कथा कहले ये बहुत सब्जेक्टिव माने पर्सनल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन कथा तो ये कहते बेसिक एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड कॉन्सेप्ट थ्योरी फैक्ट्स हाइपोथेसिस रिसर्च डिजाइन सब आमे ऑलरेडी आमे स्टडी करथिले तो या ऊपर आमे आउ एठी मु क्लासेस रे कहि परिबिनी तो आपण माने जी पढ़िबे आगो को मु टिके कांसेप्ट दे दी माने नोट्स दे दी वैल्यू एडिशन कैन टेक these are the process थाए फंक्शंस ऑफ कांसेप्ट कोन थाए बेसिकली कांसेप्ट कोन गोटे आगे सोशियोलॉजिकल नॉलेज उपरे गोटे गोटे आइडिया आनिबा कि सोशल फेनोमेना कौन अच्छी क्लास उपरे जो रिसर्च कर पावर उपरे रूल उपरे अथॉरिटी एनोमी ये सब उपरे गोटे कांसेप्ट आने सेम कांसेप्ट क्लासिफाई करवा एवं ऑर्गेनाइज करवा क्लैरिटी दबा कि इन कम्युनिकेशन हो देन बेसिस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग डाटा कलेक्शन करवा एनालिसिस ऑपरेशनलाइजेशन वन बाय तो ये या पर टिके बुझिया पई समय लागिवो आई विल नॉट गिव एवरी माने या नहले मु एटा को पढेया पई हेले इट टेक सो मेनी टाइम्स इट विल टेक सो मच टाइम सो ट्राई टू बेसिकली जो माने पढ़ी चंती तांको पई गुडे सम काइंड ऑफ गुडे नोट्स दे टेक्स्ट केम देखिले उंडे का में देखिले थ्योरी कांसेप्ट थ्योरी फैक्ट्स हाइपोथेसिस राइट यार मु की आइडिया दे दी हाइपोथेसिस कोन तार इंपोर्टेंस कोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हाइपोथेसिस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस रिलेशन एंड क्लोज हाइपोथेसिस ये हम देख रिसर्च डिजाइन केमती होबा दरकार ऑब्जेक्टिव केमती होबा दरकार मेथड लिमिटेड एंड सप्लीमेंटरी मेथड कंटेनल कंपैरेटिव मेथड हिस्ट्री करिवा तो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स जोने की फैक्ट थ्योरी ये कौन कहू एक्चुअली ता ऊपर क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मेथड चली केवल क्वांटिफाई करी होबनी ह्यूमन बिहेवियर को मनुष्यर इमोशंस को तो वैल्यू एंड इमोशंस कल्चरल वेरिएशन एथिकल कंस्ट्रेंट ये सब आमे देखि परिबा देन कंटेंट एनालिसिस कोन कंटेंट एनालिसिस या पर क्वेश्चंस एवरी ईयर आसे तो कंटेंट एनालिसिस इज सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड फॉर स्टडीइंग द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन सच एज बुक्स न्यूज़पेपर फिल्म्स स्पीच एंड सोशल ये सब आमे एनालिसिस करि परियो कंटेंट कम्युनिकेशन रो एनालिसिस it helps sociologists uncover pattern themes values and biases in communication to understand the social meaning and embedded in media and क्या हमें कंटेंट एनालिसिस जोंडे की कैरेलसन डेफिनेशन 1950 देथिले कि कोन ना रिसर्च टेक्निक जोंडे की ऑब्जेक्टिव स्टडी सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव description of the manifest the content of communication in short it studies what is being said how often and it in what context कौन कह जाइछि सेटा को स्टडी कराइयो तर जने 2 घंटा गोटे स्पीच देला से 2 घंटा स्पीच रो एक्चुअली ताको एनालिसिस करवा एवं से थ्रू फाइंड आउट करवा कि केते थरो गोटे पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर वो माने इश्यूज ऊपर से डिस्कशन
मैं ऑलरेडी डिस्कस कर सारिचे तार डेवलपमेंट केमती हला रिलेशन वेरी इंपोर्टेंट यांको पई क्लास 12 हो ऑब्जेक्टिव वेरियस स्टेप्स अछि एंड एग्जांपल तो पूरा देखिबा पेपर यूनिट 2 रो वेरी इंपोर्टेंट हमें स्टडीज रे पाई गले नोट्स वैल्यू एडिशन वगैरह यू विल गेट लाइक दिस क्वेश्चंस दे देली किछि थ्योरी हमें डिस्कशन कर देलु नोट्स किछि पाई गला सो सेटा तुमको हेल्प करि जीवो हमरे ये करे किछि प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हाट डज मैक्स वेबर मीन्स बाय वैल्यू न्यूट्रलिटी इज इट पॉसिबल टू मेंटेन वैल्यू न्यूट्रलिटी इन critically examine the debate between positivist and interpretivist on objectivity in examine the interrelationship between theory and fact relation. There can be no theory without facts. There can be no theory without facts and no facts without theory. This is very important. There can be no theory without facts and no facts without theory. Discuss with example from the social. এটা बहुत important जो facts ऊपर हमें पढ़ी थी तो जो माने बिल्कुल पढ़ी ना थी सोशियोलॉजी फाउंडेशन बैच जॉइन करो तब फाउंडेशन बैच तो माने बिल्कुल पढ़ी ना थी आपन को फाउंडेशन बैच जॉइन करिया को पड़िबो सेइथरे आपन फंडामेंटली क्लियर हेबे जोंटे कि आजि क्लास नेली आपन किछि मात्रा बुझी पार नथिबो जो माने पढ़ी चंती जानि चंती से माने मेंटरशिप इवन इफ यू आर नॉट क्वालिफाई दिस ईयर प्रीलिम्स बट मेंटरशिप नेले आपन मेंस रेडी हे जिवे एबेठू तो मेंटरशिप रे मेंस रे टेस्ट सीरीज रहउची एंड एज वेल एज मेंटरशिप रो बोथ खाली मेंटरशिप नहीं पारिबे किबा खाली टेस्ट सीरीज भी नहीं पारिबे दिस इज अप टू यू बट टेक टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप सो दैट तुमरो ओवरऑल गोटे क्रिएट हबो कि गोटे अलाइन हे कि टेस्ट सीरीज सहित तुमरो मेंटरशिप पाइलो टेस्ट सीरीज पूर्वरु से पर्टिकुलर यूनिट सरी जीवो देन ताकू टेस्ट दबो जाय कि संडे रे तो एवरी संडे टू संडे टेस्ट होची सो सेटा भी जॉइन करू दे केस पई भी तुमरो टेस्ट सीरीज 25 टा टेस्ट सीरीज अछि तार भी मेंटरशिप सहित टेस्ट सीरीज भी अछि so which one you want to take decide and thank you guys thank for watching god bless you